distributions and also our own distribution where we reach out to women and girls, to the needy women and girls. And also we work with various CSRs to distribute it to the needy girls across India and also in the African countries. Can you go to next slide, please? Quickly on the environment, which is actually our topic of today also, I'll talk about. So every sanitary pad, the plastic pads which are sold in the market, they actually release about 50 grams, 0.5 kgs of carbon dioxide in the domain when it disposed of, wherein as Anandi pads, compostable pads, when we dispose of our pads, it does only 1/10 of it, which is 0.05 kg per pad only. So in a way, we are reducing 0.45 kg of carbon dioxide emission per pad when someone is using our pads and disposing off to the market in the environment. Also, when our pads is disposed of and made compost, it actually generates 200 grams of compost by every pad. And then this can be used as manure and fertilizers for the plantations, which can be done. It can also be sold. So till date, we have sold about 72 million of compostable pads in the market, and then which reduced actually 4,000 tons of toxic plastic pads, replaced that actually with a natural manure. And our target in the next 3 years is to reach out to, so actually make a dent in terms of reducing 1 million tons of toxic waste from the environment. That's a commitment we have made, and we will achieve that, at least this and even more than that. And also on the same ground, we have CO2 emission. We have reduced this 32,400 kgs till date, and we actually wanted to do much more in the coming days. Next slide, please. We have done also work of indigenize our materials of making sanitary pads. One of our efforts, we also have collaborated with the IICT, Indian Institute of Chemical Technology, which is a CSIR lab, which also made the covaxin core materials, core formulations. We have partnered with that, and we have done research with them, including Navsari Agriculture University in Gujarat and many IITs where we have worked on this through our journey in 14 years. So we are replacing the pine wood pulp, which is otherwise imported from USA and Canada only, which was priced at 50 rupees before Corona, and now it is priced around 100 to 150 rupees a kg, with the natural options, which are waste materials, which can be converted into pulp and paper, and also generate funds for the local farmers, and also can be indigenized, so that this can be a boon for the whole hygiene industry for making sanitary pads or even diapers. So we have used hyacinth, then banana fiber, jute, which is plenty in the eastern part of India and Bangladesh, and also bamboo. Next slide, please. So this is one of our place in Burhanpur in MP, where we are doing a pilot, and we love to do it in your campus also here. Munishji has spoken to ma'am on this. We would like to do it in a first commercial pilot in Gujarat. We have set up our factory in Vapi about a couple of months back, which is now operational, and we have employed about 65 women there who are just engaged in the packaging there, and we are making about 100,000 pads per day in the factory there. Next slide, please. This is the process of converting a banana plant to a fiber and a pulp and to a sanitary pad. I'll just quickly run through that. Next slide. Next slide, please. And then from pulp, we can convert it into a paper and a airlaid paper and a sap paper, which again can be used in the hygiene industry in terms of sanitary pad, diaper, and many other applications, including making fiber out it, which can be made as a cloth at a later stage and can be sold at a very high price. Next slide. This is actually a chain how, in case of banana, how a single stem of banana, which only we generally use it for having the fruit, which is banana fruit. But if you just ignore that for a moment and then see the rest of the plants can be utilized for not only for making pulp, but also for the fertilizer, the water which is there inside banana. It can be made as a fertilizer, natural fertilizer for the farmers at the field itself. It can be also made as a rest of the things as a compost, and the rest could go for making plant pulp, fiber, as well as it can be used for the textile industry. Next, please. Till today, we have reached more than 1 million consumers over the years, and we have done workshops with the women, about 400,000 women and girls we have reached out to.
We have also working about in with 15 odd units across the world in 10 countries in Africa, especially, and also in Nepal. We have also generated 50 million INR revenue for the women actually who work in various production units we had set up in India and also in Africa. Let's go next. We are maybe the only few companies in the world which fulfills 12 out of 17 Sustainable Development Goals of United Nations while doing our work. Thank you. Next, please. These are some of the awards and recognition we have received over the years, which includes National Entrepreneurship Award by Government of India. We received Bio Oscar from Germany we are the only one in the industry to receive that award as a sanitary pad from the organization which actually defines the compostability biodegradability standard for the globe. And we have been very proudly associated with the Miss World organizations who support us without taking any charges from us to promote our products socially as well as in the various parts of India and also in Africa. Next slide, please. We are very honored to set up a unit in Nelson Mandela's home village with his own family in his 100th birthday, where it was inaugurated by the President of South Africa. And we have been part of the celebration of 100th birthday of Nelson Mandela. It was a very proud moment for us in 2018 and also for the whole nation in India, so that we could celebrate his birthday and setting up a production unit with our technology in South Africa. Next, please. These are some of our partners who work with us, which includes NGOs, government organizations, institutes in like USA, India, and also media partners who have supported us. Thank you. Move forward with a name, with a hunch, with a first step. Get a hold. पहले G20 के
proven to be a unique cinematic revelation for the viewers and participants as far as the true essence of documentaries is concerned. And the campus of Gujarat University witnessed a one-of-a-kind extravaganza and vibrations through the hosting of such a prestigious event. Let's begin this valedictory function with Gujarat University song. Please rise for Gujarat University song. वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन गुजरात यूनिवर्सिटी आपणी गुजरात यूनिवर्सिटी आपणी विद्या तपोवन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन वंदन अभिनंदन राष्ट्र चेतना कला साधना खेल भावना विकसी विश्व मानवी बनी गुजराती विश्व सकल माविल से स्नेह संप सहकारनी साथे देती तू सम्मति सौना साथ ने संगाथे सौ सिद्ध करे उन्नति प्रेम बंधुता समानता ना पल पल प्रसरे स्पंदन वंदन अभिनंदन 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 धन्यवाद। सीईसी न्यू दिल्ली के मार्गदर्शन में एवं सहयोग से पिछले कई महीनों से ईएमआरसी गुजरात विश्वविद्यालय ने इस फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में कड़ी मेहनत की है, जिसकी बदौलत हमें बहुत सारे नए पहलू भी प्राप्त हुए हैं। और इस आयोजन में संसाधन एवं व्यवस्थापन में जिनसे हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, ऐसे गुजरात विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव श्री डॉक्टर पीयूष पटेल जी को स्वागत प्रवचन के लिए आमंत्रित कर। Namaskar. On the occasion of valedictory function of 15th Prakriti International Documentary Film Festival, which is organized by CEC, EMRC, Ahmedabad, on the occasion of valedictory function, very respected dignitaries on the dais, Honorable respected Padma Shri Dr. Soma Ghosh Madam, I warmly welcome ma'am. Respected JB
That makes a lot of difference. I know. पटेल सर, सह डायरेक्टर सीईसी आदरणीय मेहरू जी, ईएमआरसी डायरेक्टर આ બધું એટલે જ વહેલા ચેક કરો. चारों तरफ है तो हम भी उसी के भाव हैं, और अगर हम उसके भाव हैं तो क्या प्रकृति हमें अलग तरह से देखती है? अगर प्रकृति हमें अलग तरह से नहीं देखती तो हमें प्रकृति को क्यों अलग तरह से देखना पड़ता है? हम क्यों उसको अलहदा करके कभी कहते हैं उसका रक्षण करना है, कभी कहते हैं उसे पोषित करना है, कभी कहते हैं उसका संयोजन करना है, कभी एकाकार होना है। तो हमने ऐसा क्या किया जब हम प्रकृति से अलग हो गए? मुझे याद है अभी इनॉग्रेशन पे ही आदरणीय महामहिम जी ने इतना सुंदर हमें जो मंत्र दिया कि प्रकृति को यदि खराब किया तो इस समझदार आदमी ने ही किया है, बाकी कोई उसकी दूषण के लिए या शोषण के लिए जिम्मेदार है ही नहीं। तो अगर हमने खराब किया है तो क्या हम उसे ठीक भी कर पाएंगे? क्योंकि हमें तो खराब करने की आदत पड़ गई है। तो क्या ठीक करने के लिए हमें फिर से धन चाहिए, फिर से व्यय करना होगा, फिर से कमिटीज बनानी होंगी, लेकिन हम स्वभावतः उसको ठीक नहीं कर पाएंगे? क्या हम उस तरफ चल दिए हैं? ये जो हम थीमेटिक कोई भी आयोजन करते हैं, चाहे हम फिल्म स्टोरीज का करें, चाहे हम डॉक्यूमेंट्रीज का करें, चाहे हम अभी हमने देखा आनंदी सैनिटरी पैड्स, यानी हम एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो खराब हो गई है उसे हम बचा लें, लेकिन खराब ही ना होने दें, इसके कितने प्रयत्न हैं। और उसका यदि हम छोटा सा एक ही प्रयत्न कर पाए कि जो डिसिप्लिन प्रकृति में है हम स्वयं को बस उस डिसिप्लिन से चलाते रहें, तो स्वयं ही प्रकृति अपने आप संरक्षित और सुरक्षित हो जाएगी। हमें सिर्फ खुद को अनुशासित करना है। हम कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, हम कहीं से भी कुछ तोड़ लेते हैं, हम कहीं भी कुछ बहा देते हैं, हम कहीं से भी कोई वृक्ष काट देते हैं, ये अनुशासन का नियम नहीं है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी और एक कविता पढ़ी थी। कविता ये थी कि मैंने पैसे का बीज बोया था, मैंने पैसे का बीज बोया था, तृष्णा से उसको सींचा था और सोचता था मैं कि ये हरा भरा होकर फली-फूलित होकर वृक्ष बनेगा। मैं रोज उसको सींचता था और रोज बाट जोहता था, वो कभी बड़ा हुआ नहीं क्योंकि मृत तृष्णा से उसको सींचा था। ये एक भाग है कि हम प्रकृति का दोहन अपने लालच से कर रहे हैं। एक और भी भाव है। बिहार में एक लोकगीत है। लोकगीत ये कहता है कि एक बच्ची है, उस बच्ची का विवाह हो गया और विवाह के बाद वो जब ससुराल गई और दुर्भाग्यवश वो विधवा हो गई। उसको उसके परिवारजनों ने घर से निष्कासित कर दिया। तो कहाँ जाए? तो वापस पिता के घर आती है। वहां एक भाई है, पिता अब नहीं रहे, माँ नहीं रही, भाई है। भाई ने उसको घर में आश्रय देने के बजाय अपने खेत में एक चबूतरे का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे उसे आश्रय दे दिया।
वो उस पेड़ के नीचे रहती है अपने बच्चों को लेकर और पूछती है कि पिता, तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। तूने भाई को घर दिया, खेत दिया और मुझे ये पेड़ दिया। तो प्रकृति हमारा वो दुख भी सुनती है, जिससे एक लड़की गीत गा के सावन में भाई को बुलाती है, पर अगर दुर्भाग्य उसे उसी भाई के घर ले जाए तो वो पूछती है उसी प्रकृति से कि तूने संदेश देने में कोई गलती तो नहीं की? क्या तूने मेरा संदेश उसी भाव से दिया? जब वो कहती है, और मैं 2 लाइन आपको बता रही हूं, धृष्टता कर रही हूं कि बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम है तोहरी बिटिया की अखियां। पुरवा भाई के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम है तोहरी बहिना की रखिया। कागा भाभी के अंगना जइयो, जइयो और उड़ उड़ कर इतना कहियो, कहियो कि हम है तोहरी ननदी की बत्तियां। ये प्रकृति वो वाहन है, ये प्रकृति वो संचार है, ये प्रकृति वो माध्यम है जो हृदय को हृदय से जोड़ती है। और हमने प्रकृति को कहाँ आज लाकर खड़ा कर दिया कि हमारे लिए प्रकृति एक निर्जीव अस्तित्व हो गई है। हम अपने घर में पौधा लाते हैं पर पानी देना भूल जाते हैं। हम प्रकृति के उत्सव को मनाते हैं, संजोते हैं, पर उसके जैसे ही उसका मूल्य मिल जाता है, फिर हम उस खेत की तरफ तब तक नहीं देखते जब तक दूसरी फसल ना आ जाए। और फसल तो आप सब जो बहुत से बच्चे जो अर्बन कल्चरल एक जो एंटिटी है उसका जो प्रोडक्ट है, मुझे नहीं पता आएगा, ज्ञान से भी आएगा और हम सबको फिर से वहां पूर्वा की तरह बहा के ले जाएगा जहां हमें आज जाने की आवश्यकता है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने गुजरात यूनिवर्सिटी को, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे यहाँ के दर्शकों को चुना इस प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल के लिए और आप सबकी उपस्थिति से हम धन्य हुए हैं। मैं सामने मालती मैम को, कोमल जी को, नदा भाभी जी को, आप सबको देखती हूँ। बहुत से लोग परिचित हैं। आप सबको पुनः सादर वंदन और सिर्फ इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम भी प्रकृति की तरह अनुशासित हों, मैं आपसे धन्यवाद के साथ विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया जी। आपने प्रकृति के संवर्धन के बारे में बहुमूल्य बातें बताई, जिससे कुछ पंक्तियां कहने का मन हो रहा है कि झरनों में तेरे पावन संगीत खेलता है, तेरे पर्वतों में सूरज कविता उड़ेलता है, तेरी खेतियों में जीवन, तेरे जंगलों में दर्शन, मैंने दिए हैं 2 कण, तुझसे अपार पाया। प्रकृति की इस महत्ता को उजागर करते हुए इस फिल्म फेस्टिवल, दिवसीय फिल्म फेस्टिवल जिनकी अध्यक्षता, नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित हुआ और एक उत्तम प्रशासक, समर्पित शिक्षक और व्यवसायी के रूप में जिनका योगदान अनुकरणीय रहा है,
ऐसे सीसी नई दिल्ली के माननीय निर्देशक प्रोफेसर जगत भूषण नड्डा जी को अपने संबोधन के लिए सत्तर निवेदन करते हैं। Honorable Chief Guest, Honorable Vice Chancellor, Gujarat University, other dignitaries on the dais, and my dear friends of EMRC centers and other friends of Gujarat University. हर चीज का अंत होता है और उसी कड़ी में ये प्रकृति फिल्म फेस्टिवल जो शुरू हुई 28 को, वो आज उसका अंत न कहूं लेकिन समापन उसका आज है। प्रकृति के बारे में ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कहा, बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने सुनाई। मैं कई बार ऐसा भी फील करता हूं कि कुछ चीजें पुस्तकों में रह जाती हैं। जहां इकोनॉमिक्स की बात करते हैं आजकल, तो आई थिंक द बिगेस्ट रिलीजन नाउ टुडे इज एट द मोमेंट इज economics. And this may be extremely sad, which we may realize after a long time. But when we talk of money as the economic religion, it means it cuts across all religions, because religion is basically a way of life. Now, what money treats us and the way we react and respond in the environment is a different story than probably what we were about ages back. अभी आप देखिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सब इकोनॉमिक्स की ही बात करते हैं। और जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अपना जो सीखा था और अपनी जो धारणाएं थी और अपनी जो फिलॉसफी थी, वो धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हुई। मैं बहुत के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन अपनी ही रिलीजन के बारे में जानता हूं। हिंदू रिलीजन है। फील करता हूं मैं कि अगर जिस धर्म को हम मानते हैं उसको हम दिल से कार्यान्वित भी करें तो शायद हमारी ये प्रकृति बच जाएगी। हमारा फर्स्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड था, वो मीन था। हम उनको भी पूजा करते हैं जो समुद्र के नीचे हैं। सेकेंड इनकारनेशन ऑफ गॉड था टॉर्टोइस, विच वॉज इन वाटर एंड देन केम टू लैंड। हम धरती को मां की संज्ञा देते हैं। हम रिवर्स को गंगा, यमुना, सरस्वती मां बोलते हैं। इन सबको बोलते हैं। अगर इनको माने भी तो गंगा गंदी नहीं होगी, सरस्वती गंदी नहीं होगी, यमुना गंदी नहीं होगी। हम अगर देखते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, तो कहां केदारनाथ और कहां बद्रीनाथ हमने धाम बनाए रहे हैं, जिससे हम आस्था से वहां जाएं और उसका भी सम्मान करें। लेकिन सम्मान सिर्फ मांगने के लिए न जाएं, उनको बचाने के लिए जाएं, तो शायद इस प्रकृति का उद्धार होगा। अगर आप समुद्रों की बात करते हैं तो 3 धाम समुद्र के किनारे बनाए, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये 3 धाम समुद्र के किनारे बनाए, इसलिए समुद्र कह लीजिए, धरती मां कह लीजिए, रिवर्स कह लीजिए, पेड़, बैनियन ट्री और पीपल ट्री को हम सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी करते हैं, उसको हम जनेऊ पहनाते हैं, उसके चारों तरफ हम चक्कर काटते हैं। ऐसी कोई चीज इस पृथ्वी पर नहीं है जो हमारे लिए माननीय ना हो और हम उसका आदर न करते हैं। लेकिन सिर्फ आदर तक, उसके बाद तुरंत इकोनॉमिक्स में मूव कर जाते हैं। अब तो बाबाओं को भी आईफोन चाहिए, बाबाओं को भी मर्सिडीज चाहिए। ये एक फिलॉसफी हो गई है which has cut across all religions, and that is where I say economics is the biggest religion which is working now. Nevertheless, this is not an occasion to be talking about those philosophies. ये प्रकृति film festival goes everywhere in the country. CEC is an organization which is into dissemination of digital education to the country. At this point of time, the country has 27.1%
gross enrollment ratio. Now, 1,100 universities are working in this country, and about 40,000 to 50,000 colleges exist. The government is very ambitious, and it is very serious with the national education policy which has come in 2020. What it wants is the 27% after 70, 75 years of independence. This is a very, very sad story for this country. There are so many dropouts after secondary education. And that is where the government is making a lot of effort so that nobody should be left behind because of socio-economic, cultural differences geographical differences that we have. Each individual must get an opportunity to have formal education if they wish to. And that is where we feel that the government has the ambition plan that by 2035, we must have 50% gross enrollment ratio. That means it is nearly doubling in another 12, 13 years that we have got. Be sure that in another 12, 13 years, 1,100 universities are not going to come up. 40, 50,000 colleges are not going to come up. It is only through digital education that it is possible that you can reach somewhere close to 50%. Otherwise, it is just not possible. We want to give an opportunity to each individual, the best we can do, so that he can have education if he wishes to. और इतना ही नहीं, इस सरकार ने ये भी सोचा है कि हम मातृभाषा में पढ़ाएंगे. मातृभाषा का एक अलग मजा होता है. हमने गांधी पिक्चर 2 भाषाओं में देखी, अंग्रेजी में भी देखी और हिंदी में भी देखी. जब अंग्रेजी में देखी तो एक पिक्चर देखी और पिक्चर अच्छी लगी, लेकिन जब हिंदी में देखी तो आंख से आंसू टपक पड़े. यही फर्क है मातृभाषा का. जब आप अच्छे गाने अच्छे गीत अपने भाषा में सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. एंड दैट इज द रीजन दैट टिल नाउ आर्मी हैज नॉट बीन डिसमेंटल्ड on these lines. It still exists. 1984 में जब वो अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल था उस पर अटैक हुआ था, तो झारखंड में सिख रेजिमेंट ने बगावत कर दी थी और ब्रिगेडियर को किल कर दिया था इमीडिएटली आफ्टर 1984. उसके बाद बहुत बहस हुई कि आर्मी को भी डिसमेंटल किया जाए, लेकिन तय यही हुआ कि सिख रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट. एक इंग्लिश लिटरेचर था, एक इंग्लिश लैंग्वेज था. तो सोचता हूं कभी कि 10 वर्ष मैंने अपनी जिंदगी में उसका 1/3 भाग सिर्फ एक विदेशी भाषा सीखने में लगा दिया. उस पर भी शायद हम कंप्लीटली कंट्रोल नहीं हो सकता है. अपनी भाषा तो अपनी होती. तो मुझे अगर 1/3 भाग मुझे ज्यादा भूगोल पढ़ने में दिया होता, हिसाब पढ़ने में दिया होता और कोई सब्जेक्ट में दिया होता, तो शायद मैं कुछ और ज्ञान प्राप्त कर पाता बनिस्बत सिर्फ एक फॉरेन लैंग्वेज. टू लर्न ए लैंग्वेज इज एन एसेट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. Our learned vice chancellor is Gyani of 13 different languages, and I must applaud you for that, ma'am. But all said and done, to know that is an asset. लेकिन कितनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, यही एक, और वो कनेक्ट करती हैं, ये एक बड़ी बात होती है जिसके बारे में हमें सोचना है. जब हम बिलीव करते हैं सीईसी में कि डिजिटल ढंग से 4 जो आयाम हैं जिसके थ्रू हम डिजिटल एजुकेशन दे सकते हैं. एक है फीचर फिल्म्स, जो कश्मीर फाइल्स ले लीजिए या केरला स्टोरी ले लीजिए या वैक्सीन वॉर ले लीजिए. ये सारी फिल्म्स हैं, फीचर फिल्म्स हैं. इनको थोड़ा ड्रामेटाइज भी करते हैं, इनको थोड़ा फिक्शन भी कर सकते हैं,
Lekin by and large, they tell the right kind of story, what has happened. So it is a learning, it is teaching, it is educating. The other is documentary, which is not fictional at all, which is facts. And I think documentaries need to be more interesting so that students are able to see, learn more better. The third is MOOCs that we talk about, the courses and earning credits. And the fourth is Swayam Prabha, that we disseminate education and lectures through television so that the far-flung students in the far-flung areas can also understand that. इन चार चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं. हमारा मैंडेट है डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल और वीडियो फिल्म कंपटीशन कराना सारे नेशन में. हर बार अगले अगले प्रदेश में अगले अगली जगह हम करते हैं. अभी मैंने दलजीत जी से कहा है कि हम पटियाला शायद पहुंचने वाले हैं. उन्होंने कसम खाई है कि उन्होंने हम लोगों को गोल्डन टेम्पल भी घुमाना है उसके साथ साथ. तो लेट अस सी, विल वर्क. लेकिन हम चुनते उस जगह को हैं जहां मैं वाइस चांसलर से पहले मिल लेता हूं, आंक लेता हूं, समझ लेता हूं, और जब विश्वास होता है तभी उस सेंटर में मैं जाता हूं. सेंटर हो सकता है मेरा बहुत अच्छा, लेकिन वाइस चांसलर साहब का साथ ठीक नहीं चल रहा है तो हम कहां रन कर पाएंगे. तो मैम आपको बहुत बड़ा क्रेडिट देते हैं. शी इज एब्सोल्युटली अलाइंड एंड वेरी enthusiastic about the whole thing. From the day one, meeting the governor and we inviting him together. So it was a good feeling that I had, and that is why I chose. I must congratulate all of you from Gujarat, those who are here, the students, the faculty, and anyone who has come. Your presence is a support to us. We want everybody to understand that we exist for education, for you, for your kids, and for public at large. And this is with these words, I would say that it was a wonderful function. As far as I am concerned, more videos must come from EMRCs. This is the message that I would like to say. And as far as the last presentation that I saw about the sanitary napkin, I would wish that it comes as a documentary that goes far, far places for good of all. Thank you very much. धन्यवाद प्रोफेसर नड्डा जी. आपने मानवीय मूल्यों का वहन करके प्रकृति का सम्मान और उद्धार कैसे किया जा सकता है और उसके लिए शिक्षा का डिजिटल प्रसार बहुजन हिताय कितना जरूरी है वो आपने दर्शाया. आपका बहुत बहुत आभार. Ladies and gentlemen, our today's guest of honor is Honorable Professor Dr. S. Gauri, former Vice Chancellor of University of Madras. Dr. Gauri is Professor of Mechanical Engineering and founding head of Manufacturing Engineering Department, Anna University. He was with NIT Surathkal and National Singapore University. He has served as Registrar of Anna University and also he had been the long-term director of EMRC for around 8 years. 20 research scholars have pursued their PhD degree under his guidance. He has more than 100 research papers and few patents to his credit. At this moment, we request you, sir, for your address. Honorable Professor Dr. S. Gauri. Good afternoon. All glory to Almighty. सब भगवान की महिमा. Honorable Director, on par with the Vice Chancellor of Central University, Director of Consortium for Educational Communication, my good friend, well-wisher, guide, Professor Jagat Bhushan Nadaji, and Honorable Vice Chancellor of this wonderful university, Professor Nirja Guptaji, and today's chief guest, Padma Shri Dr. Suma Ghosh, and our own friend, Dr. Sunil Meruji, and Dr. Naresh Dave,
the director of MMRC of Gujarat University, and other guests on the dais. And of the dais, my former colleagues of MRC and our own friends from different MRC, the level of directors, producers, camera persons, editors, and the faculty members of this university and student friends, press and media. It's a great pleasure and honor to be here. Of course, about 14 years ago, I was in IIM Ahmedabad under an EDP Executive Development Program. Then an invitation of the CEC Honorable Director, and I'm very happy to participate as a guest of honor on this valedictory function. Whatever I wanted to say, Professor Nadaji described in details in 2 languages. So I have to share some experience which may be helpful to the young students. Basically, I'm an engineer, mechanical, but when I took the charge as a director of MMRC, then I found that that was the inner passion in me, and I could contribute to the maximum. To the maximum in the sense there was no holidays. Even my wife used to say, why are you going to MMRC on Sundays? Because on Sundays also we used to have the shootings. And during the COVID lockdown in Anna University, before I took up the Vice Chancellor of Madras University, during the lockdown, there were 2 departments were functioning. One was the Vice Chancellor's office, and the other was MMRC Anna University, Chennai. Why I'm saying this is that the team spirit, the efforts, motivation given by CEC, Professor Nadaji. After he took up the director of this CEC, the lot of changes towards the progress took place. I used to always have the feeling of this Philip Kotler, the father of marketing, and what he used to say, to stand where you are, you should run. Otherwise, you may have to run away, go away, somebody will occupy the place. That means getting a place, position is difficult. And once you get it, staying in that position is still challenging. And more challenging is how you progress in that position. So, but the MMRC, using this media, the multimedia and other digital technology, if you have a passion, you won't feel that you will be working. I started working only for the last 3 years. When I was Vice Chancellor of the Madras University, I felt I was working in a job. Until then, out of my 34 years of experience, and I never felt I was working. I felt that I was paid for to do some work as a hobby, because there was a passion. So my young friends, students, you should take up this media as your passion. The passion is more important. Once you have the passion, and you'll be able to create and develop, and awards and rewards will automatically follow you. That is how the MMRC Chennai got many awards like this. And this, somebody asked, why this Consortium for Education, Communication and Educational Multimedia should organize the film festivals? I told them, this is the name you see, Consortium for Educational Communication. There is education. It doesn't mean Consortium for Academic Communication. Similarly, Educational Multimedia Research Center, it doesn't say Academic Multimedia Research Center. That means education is a wholesome. In that, academic is an important element. So we focus academic also. In addition to the academic, there are many things we have to educate. And one such is such a film festival where you focus exactly on the environment, development, human rights, and Swachh Bharat, and many more are there. Of course, for each and everything that cannot be grouped. So these 4 major element groups comprise of all these other elements comes under education. So the easy way to educate the people is today the media, multimedia. And digital technology has helped us to do a lot of facilities, and as well as the social platforms. Those days, to make a film and you want to screen or distribute, first of all, you just find a distributor
and the area of distribution, and their areas are limited to 4 districts or 5 districts or 6 districts like that only. But today, there is no limitation on area of distribution. Once the social platforms like YouTube's are allowing you to screen, then there is no area of limitation. Immediately, within a matter of second, a person, if you load it, and it can be seen in South Africa or other places in the world within a matter of second. That's a faster, easy accessibility. So these digital platforms, social platforms have given us such an accessibility. But what you are supposed to do is make use of them. And more than that, what is required is a creativity. How creative you are, that is very important. And creativity cannot be given by technology. Only the technology can enhance your creative ideas to come out. How will you be able to exhibit? Just like Google cannot replace gurus, but Google, the technology can enhance the teaching methods. How long you'll be going on having the old technological teaching or this classrooms. But for that, you can make use of this digital technology, online classes. But still in the online classes, how creative it can be there. An adding of films or the slides or so many things can be included in that so that it will be made interesting for the listeners or the learners as well as the teachers in this way. So this 3 days event has given us a sort of a new ideas. I'm sure I could not be there yesterday or day before yesterday because of other work, but I'm sure that you have witnessed a lot of programs as well as this how the outer world has been connected and brought into these auditoriums so that you'll be able to think and progress further in this way. So in that way, I wholeheartedly appreciate the efforts taken by the MMRC of Gujarat University and CEC of New Delhi and other producers who have, the directors who have come forward to contribute to the film. I have organized this Prakriti in the year 2019. That was a Prakriti 12. Only at that time it was renamed as International Film Festival with the blessings of Honorable Professor Nadaji. Then that was this Swachh Bharat was included in that. So in that way, it should be able to progress well. And the students not only do that, we do the shooting, but more than the shooting or production, the data, that is a content. And more than that, what you do is the editing, because only at the stage of the editing, the whole film is produced. Then only the audience will be able to understand it. And today, the government of India, Honorable Prime Minister has given a lot of such plans, proposal through UGC for this digital education. And CEC is fulfilling all these plans of Honorable Prime Minister. And one such is all the video lectures available, either DTH or MOOCs, should be translated into all the regional languages. That was a project taken up by CEC even during the lockdown. So at that time, I was giving a voiceover. That was my last job. On August 20th, I was the director of MRC. On August 21st, I became the Vice Chancellor of University of Madras. On August 20th, the last job what I was doing in MRC Anna University was a dubbing artist. I was giving my voiceover for a professor of Impal University who was giving a lecture on marketing management. I was giving in Tamil language for that dubbing voiceover. Then by around 5:30 I closed. Then 5:45 I went to Raj Bhavan, received the order for the Vice Chancellorship. Why I'm saying this is, I was sure that next day I'll become Vice Chancellor, but still I want to do the work. That was a passion, because this technology, the media has unlimited opportunities. And friends, student friends, it has unlimited opportunities and growth. Only thing you should immerse in that. Once you immerse, you'll find it is a bliss. You'll get a lot of blessings. And during the translation also, I found some difficulties. With that, I will close down the speech. One is when you give the voiceover, the two things are important. One is the direction of lip movement. Direction of lip movement and duration of lip movement. From one language to other language, when you translate, give voiceover, it is very difficult. In cinema, film, a long shot will be there.
the heroine or hero, long shot will be there, so the lip movement will not be very much noticeable. But when you are giving a lecture, your face is close to that. At that time, the lip movements are very important. Otherwise, it become a funny thing. For example, simple one I want to say, there was a Hindi song, you know very well. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. The life, nothing is there except your story and my story. The original version, you see the video and you do the dubbing voice. The voice will be जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है. This is a long duration. Life is nothing except your story of mine and me, means the duration is long. So you have to suitably coin the words. So what I want to say is the editor should have some language skill also. So editing is important and editing should make the film more valuable and enjoyable. I'm sure this Gujarat University MRC will be able to contribute more and more for the digital education and the student community and contribute to CEC. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your inspirational speech, kind words, and your valuable views on filmmaking. We are extremely honored to have your presence at this film festival. Thank you very much once again. इस समापन समारोह के मुख्य मेहमान परम आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका है. साहित्य में स्नातक शिक्षा के बाद आपने अपनी उच्च शिक्षा संगीत में प्राप्त की है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विद्या वाचस्पति की उपाधि अर्जित की है. प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की संगीत शिष्या रही है और खान साहब ने आपको अपनी मानस पुत्री के रूप में स्थान दिया है. आप ठुमरी, टप्पा, होरी, चैती, कजरी, दादरा और गजल जैसी बनारस घराना की गायकी में माहिर है. आप भारत की संसद में गायन प्रस्तुति करने वाली पहली महिला है. अपने संगीत करियर में बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित आपको 2016 में कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. आपको काशी कोकिला और गांधर्व कोकिला जैसे बिरुदों से भी नवाजा गया है. आप मधुमूर्छना नामक एनजीओ की संस्थापक भी है, जो साधारण पृष्ठभूमि के अलग रूप से सक्षम संगीतकारों को समर्थन करने के लिए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है. संगीत के अलावा आपने सामाजिक कार्यों और महिला कल्याण के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान की है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अनेक अभियान की आप ब्रांड एम्बेसडर भी रही है. इस क्षण हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आपको सादर निमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए. परमादरणीय पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी. इसमें थोड़ा इको ऐड हो सकता है क्या? क्योंकि नीरजा जी ने कहा है थोड़ा सा गाना गा के मुझे, क्योंकि हम तो बोलते नहीं, हम गाते ही हैं. और ये माइक बोलने वाली माइक है, गाने वाली नहीं है. साज भी मेरे साथ नहीं है. थोड़ा सा इसमें अगर कुछ ऐड कर सकता है कोई मसाला. थोड़ा सा कुछ दीजिए तो हमें इसका ही साथ मिल जाएगी. मैं मंचासीन सभी महानुभाव को हृदय से प्रणाम करती हूँ. 3 दिन से जिस सब्जेक्ट में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल प्रकृति, ये मेरे हृदय के बहुत करीब सब्जेक्ट है. क्योंकि हम गायिका प्रकृति को देखकर ही गाते हैं, प्रकृति को ही पूछते हैं. और हमारे सामने जो बैठे हैं हमारे दर्शक, वो हमारा इनसे भी ज्यादा प्रिय है. क्योंकि हम लोग जो गाते हैं ना, कलाकारों को देख, श्रोता को देख के गाते हैं. पहले जमाने में रजवाड़ों का दौर होता था तो राजा को देख के गायिका गाती थी, खास करके बनारस में, कि उनकी नजर में कितनी चाहत है उस गायिका के लिए, तब वो गा पाती थी.
इसलिए आपको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। जब कोरोना हुई थी तब हम आपको देख नहीं पाते थे, तो हम लोग हृदय से सूख गए थे, तो इसलिए आपको स्पेशल प्रणाम। और हमारे जो आयोजक है उनको मैं स्पेशल हृदय से नमन करती हूँ कि इस सब्जेक्ट को चुनने के लिए। आपने कहा ना कि डॉक्यूमेंट्री में थोड़ा रस कम होता है, लेकिन डॉक्यू ड्रामा जब होता है ना तो उसमें रस आ जाता है, वो लोगों को और छुएगा। और इस पूरे आयोजन के जो अध्यक्षा है माननीय निर्जा जी, जिन्होंने मुझे बुलाया भी है, मुझे बहुत प्यार करती है, हमें यहाँ पर आने का मौका उन्हीं के लिए मिला है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सभी को फिर से प्रणाम। मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, जब मैं उनसे सीखने जाती थी, विंध्याचल में रहती थी, पहाड़ों में मंदिर के पास, तो जैसी बारिश होती थी तो मुझे बोलती थी, एक रिक्शा बुला लेती थी, चलो हम लोग अष्टभुजी जाएंगे और वहां कजरी गाएंगे। वो कितने हमारा दिल प्रभावित होता है प्रकृति से। मेरे सदगुरु कहते हैं, आपने नड्डा जी ने कहा कि प्रकृति ही तो ईश्वर है। अगर हम क्योंकि हम वो नियम की पालन नहीं करते हैं, 4 बजे उठ के दाता कर्ण के रूप में सूर्य देव हमारे सामने आते हैं, हमें देने के लिए आते हैं। हमें कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, भाग्य पर निर्भर ही नहीं करना है। अगर 4 बजे उठ के उस लालिमा को, हम उस सूर्य देव को प्रणाम करके जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो 100% पूरी होती है। मेरे जिंदगी में हुआ, मैं उसी समय उठती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, कहीं जाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब खुद चल के आए मेरे जिंदगी में, मेरा गाना सुन के, तो ये मिलता है। मैं आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो हमारा कल है। मैं लास्ट 3 इयर्स 30 स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रही हूँ, क्योंकि वो अगर प्रकृति को समझेंगे, वो अगर कला को समझेंगे, तभी कला भी जिएगी, प्रकृति भी जिएगी। क्योंकि ओंकार से हमारी सृष्टि हुई थी, जब प्रलय हुआ था तो पहली गायकी सामवेद से आई, उस प्रलय को शांत किया गया। क्योंकि हर चीज अगर शांत होती है तो जिंदगी भी शांत होती है, प्रकृति भी शांत रहती है। जिंदगी में जो हम औषधि लेते हैं, जो खाते हैं, सब कुछ शांत होना चाहिए। तो ऋचा, मैं 2 लाइन, तो बड़ा है लेकिन मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ, शांति ऋचा, जहां से हमारी पहली गायकी आई थी और प्रलय शांत हुई थी, प्रकृति शांत हुई थी। ओम हरि ओम शांताद्यौ शांता पृथिवी शांतम् इदमुर्वन्तरिक्षम् शांता उद्धन्वतिरापः शांताना संतोषधिः शांतानि पूर्वरूपाणि शांतं नो अस्तु कृताकृतम् शांतं भूतं च भव्यं च सर्वमेव समस्तु नः। ओम शांति 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 भी। अगर गाय को वृंदावनी सारंग सुनाई जाए तो बहुत अच्छा दूध देती है, और पेड़ को अगर बहुत सुंदर गाना सुनाई जाए तो पेड़ खिल उठती है। उससे भी जो ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जब पहली बारिश होती है तो हमारे यूपी के, खास करके बनारस मिर्जापुर के औरतें कैसे खिल उठती है। और उसके जब प्रियतम दूर देश में रहते हैं तो वो सच श्रृंगार करके, निज्जा जी ने कहा कि भाव से, भाव ही तो सब कुछ है। तो नड्डा जी ने कहा कि प्रकृति हमें कितना प्रभावित करती है, कि वो हमारी संदेश लेके जाती है। तो कैसे एक लड़की झूला झूला के सच श्रृंगार करके अपने पति को बुलाती है। देखिए आजकल तो चिट्ठी से बुलाने की जरूरत नहीं है, फोन लगाती है और वो
गाने लगती है वीडियो कॉल करके कि पति जो बंबई में है, मॉरिशस में है, सूरीनाम में है, वो आ जाए इस बारिश को एंजॉय करने के लिए। अरे रामा रिमझिम से, हाँ अरे रामा रिमझिम से बरसे लपनिया, चली तो याओ, चली तो याओ, चली तो याओ जनिया रे हरी। सर के बाल है काले रामा, मोतियन मांग सवारे रामा। अरे रामा चोटियन में, मेरी चोटी भी लंबी लंबी है, अरे रामा चोटियन में लागी झुन झुनिया, चली तो याओ, चली तो याओ, चली तो याओ जनिया रे हरी। अब इतना बुलाने से कौन नहीं आएगा, तो वो आ गए हैं। अब देखिए औरत की नखरा भी जो अदाएं है ना, वो प्रकृति से रिलेटेड है, क्योंकि वो खुद ही प्रकृति है। अब वो क्या चाहती है, वो पति के साथ कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, वो पति ड्राइव करेगा और वो घूमने जाएगी बनारस पे। मोटर गाड़ी पे चढ़ा मोरे बार बलमू, मोटर गाड़ी पे चढ़ा मोरे बार बलमू, मोरे बार बलमू, मोरे बार बलमू, तुलार बलमू। मोटर गाड़ी पे चढ़ा मोरे बार बलमू, बेनिया बाग से चढ़ा चौक थाना पे उतारा। बनारस में दो जगह है, बेनिया बाग में बिस्मिल्लाह खान साहब रहते थे। बेनिया बाग पे चढ़ा, बेनिया बाग से चढ़ा चौक थाना पे उतारा, विश्वनाथ जी का दर्शन कराए द बलमू, 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 मोरे बार बलमू मोटर गाड़ी पे। देखिए औरत चांद पे भी जा रही है, सब कुछ करती है, लेकिन उसकी चाहत होती है प्रकृति को देखकर। वो प्रकृति नहीं होने से इसकी ऐसी चाहत नहीं होगी, इसलिए प्रकृति को बचाना है हम लोगों को। आपने 12 मासा सुना है कि प्रकृति अगर शांत रहेगी तो हम हर ऋतु को देख पाएंगे। आजकल प्रकृति अशांत है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। केदार में कैसे पानी आ गई, किस तरह से भूकंप आ रही है, क्योंकि प्रकृति अशांत है। हम उन्हें ना अच्छा गीत सुना रहे हैं, ना हम लोग प्रकृति के अनुरूप चल रहे हैं। जब प्रकृति शांत रही तब ये सब गीत बने थे। 12 मासा गर्मियों के समय 2 लाइन सुनाती हूँ, समय है, समय कम है, 1 लाइन। औरत कह रही है अपने पति से कि इन ऋतुओं में तुम छोड़ के हमें मत जाना। दोपहरिया बितैला हो बलम, दोपहरिया बितैला हो, यही झुलनी के ठैया बलम, दोपहरिया बितैला हो। 4 महीना के गर्मी पड़त है, टप टप चुवेला पसीनवा बलम, तनी बनिया दुलैदा हो। तो हर ऋतु में पति पास पे होना चाहिए, तो प्रकृति का मजा हम ले सकते हैं। अंत में मैं ये कहूंगी, ये जो अहमदाबाद है, ये जो गुजरात की भूमि है, बहुत पावन भूमि है। यहाँ हमारे प्रिय बापू जन्म लिए हैं, इस भूमि से पटेल जी जन्म लिए हैं, और अभी मोदी जी का भी यही जगह है। और हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है। आप सभी ने यही कहा कि हमें अपना जिम्मेदारी निभाना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, तभी तो हम प्रकृति को शांत रख पाएंगे। तो बापूजी को जो प्रिय गीत था वो मैं 1 लाइन सुनाऊंगी, टैगोर का लिखा हुआ, आप हमारे साथ गाइए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে,
একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা चलो रे तबे একলা चलो रे। और स्टूडेंट्स के लिए एक लाइन मैं सुनाऊंगी। आओ हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए। आओ हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए। है बापू का सपना रहे स्वच्छ अपना प्यारा हिंदुस्तान। है बापू का सपना रहे स्वच्छ अपना प्यारा हिंदुस्तान। जागो युवाओ हरियाली लाओ तुमसे है ये जहां। बदलेगा देश मेरा मिलकर एक सपना बनाए, अपने वतन को सजाए, सुंदर समृद्ध बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए, सुंदर समृद्ध बनाए। थैंक यू सो मच। मेरा आवाज बैठा था। हम सभी बहुत हृदयपूर्वक आपका आभार प्रकट करते हैं। आपकी मधुर वाणी ने इस फेस्टिवल को एक अनोखी शीतलता प्रदान की है। संगीत और प्रकृति का जो मनोहर तादात्म्य है वो आपने साझा किया। आपके मधुर स्वरों की धाराओं को जैसे श्रोताओं ने अपने कर्ण से अमृत रसपान किया हो, ऐसी अलौकिक प्रतीति हम सभी को हुई है। अगर आप सहमत हैं तो एक बार जोरदार ताली से फिर से एक बार आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी का अभिवादन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। And now we are moving towards the award ceremony segment to recognize the immense work of the filmmakers who presented their documentaries in this festival. और इस पुरस्कार वितरण सत्र के लिए मैं फिर से आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अंकिता शाह को, जिन्होंने इन 3 दिनों बखूबी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के सत्र का संचालन किया है। डॉक्टर अंकिता शाह। Thank you, sir. The 15th Prakriti International Documentary Film Festival was conducted in 4 categories, including development, environment, Swachh Bharat, and human rights. Starting with the development category. The best awarded documentary in this category is Pragati by director Snehashish Das. We would like to invite you, sir, for prize money of rupees 50,000, a trophy and a certificate. I would request Chief Guest, Madam Dr. Shoma Ghoshi, to do the honors. Guys.
other 3 documentaries that were selected for screening during the festival by the juries in the development category are Bridging the Medical Divide by Bidit Roy, Water for Tomorrow by Dr. Ravindra Kumar Sohane, and Farming the Sea by Seema Muralidhara and H.B. Muralidhara. The next category to follow is Environment. The best awarded documentary in this category is Biodegradable Pot by Mradul Gupta ji. I would request him to come upon the stage to collect the prize money of rupees 50,000, a trophy and a certificate. The other documentaries selected for screening in the environment categories were Biodiversity of Manipur by Thodam Jiban Kumar Singh and Web of Life by G.S. Unikrishnan Nair. The third category is Swachh Bharat. The best awarded documentary in the Swachh Bharat category is Pune Swachh Group From Informal to Formal by filmmaker director Arjun Gupta ji. We would request Mradul Gupta ji, his friend and colleague, to come upon the stage on his behalf and collect the prize money of rupees 50,000, a trophy and a certificate. The 3 documentaries that were screened in the Swachh Bharat categories are And Now I Want to Fly by Jaya Josh Raj CL, Operation and Maintenance by Devendra Chopra, and Processing of Waste, a story on Mysore by Mradul Gupta ji. I would request once again Mradul ji to come upon the stage to collect the certificate. The last category is human rights. The best awarded documentary in this segment is Hum Sab Ek Hai by Seema Muralidhara and H.B. Muralidhara. I would request their nominee representative to come upon the dais to collect the prize money of rupees 50,000, a trophy and a certificate. The documentaries are selected for screening in the... I'm so sorry. I'm sorry for that. Mike, please. कैसे अच्छा करें और हमारा जो स्लोगन है हम
सब एक है। तो जब कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो हम अपना राइट साइड का जो हाथ है तो हम सभी बहनें जो है निर्णय लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर जो बैठे हैं इतने सेंसिटाइज हुए हैं, हम अपना भाव से जब मैं बोलूँ कि हम सब, आपको बोलना है एक, क्योंकि आप और हम और यहाँ सभी जो बैठे थे वो ये प्रकृति। तो क्या आप हमारे साथ ये कर सकते हैं? मुझे माइक की जरूरत नहीं है। हम सब एक है, वास्तव में हम सब एक है. The documentaries selected for screening during the festival in the human rights categories were Trans Kashmir by S.A. Hanan and Surbi Devan, Yoga, a Bliss for Differently Abled by Sajid Naduthodiji. As we have the filmmaker with us, Sajid ji, please if you can come up on the stage to collect the certificate. And the third documentary was Dol, Adim Sanskriti Ki Dhamak by Sheikh Akram ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का और सभी प्रतिस्पर्धियों को बहुत बहुत अभिनंदन। अंत में आभार दर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं सीईसी न्यू दिल्ली के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर सुनील मेहरो जी।